Hello everyone and good afternoon. Welcome to the Hindu editorial section presented by Vaishnavi. Let's get started. I hope everyone can see and hear me. Please do let me know if you can see and hear me. All right, so let's get started. Today we are going to take two articles, two editorials from the Hindu of today's newspaper, that is 6th of March. And we are going to discuss first the vocabulary and then we are going to go to the editorial. Aram se jana hai. So let's get started. And I will be first talking about words related to today's editorial. Okay, so let's get started. Now before I get started, you already know what you are supposed to do, but let me repeat it once again. Please do join my Telegram channel, which is Unacademy Vaishnavi CLAT. And the QR code is given right here. You can use the VP10 code to unlock free classes and subscriptions to get discounts, okay? So please do subscribe to the channel and use my code for free classes and discounts. Okay, so let's get started now. Now these are the words that I have, these are the words जो हमने लिए हैं, article से ही लिए हैं, editorial से ही लिए हैं, and the meanings are given over here. So सबसे पहला word है inhabit. Inhabit means live in or occupy. Basically, someone is inhabiting a certain place. That means it is living in a certain place, or he or she is living in a certain place or occupying a certain place. And it is verb. Parts of speech kaun sa ho gaya? Verb ho gaya. That means we use it as an action. Okay. Moving on to the next one. Next one is confluence. Confluence is a noun. That means you are supposed to use it as a noun. Inhabit can change into inhabited, inhabiting. That means it is a verb. And confluence is a noun. That means you cannot change it into the ing form or ed form. Okay. So an act or process of merging is called a confluence. Okay. Act or a process of merging. Merging basically is coming together, is called confluence. Moving on to the next one, pedestrian. I think this word, इस word के दो connotation हैं. Now remember, जो meaning मैं बता रही हूँ class में, these are the meanings related to the passage. Okay, so the meaning
ऐसा नहीं है कि inhabit का दूसरा meaning नहीं होता है. So it can be a different part of speech as well. Same goes for confluence. Any given word can be in different part of speech. लेकिन जैसा use किया गया है इस article में, in editorials में, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ what is the meaning, the implied meaning in that editorial. Okay, so you have pedestrian. Pedestrian का general meaning होता है the person who walks. Okay, is a pedestrian. The person who's walking is a pedestrian. There were a lot of pedestrians walking on the street. But when we are using it in this context, in the context of writing an article, it means lacking inspiration or excitement, something that is very dull. Okay, so something that is dull is called pedestrian. Very commonplace, बहुत ही normal सा, कुछ अलग नहीं है उसमें, is pedestrian. Okay, so pedestrian is an adjective because it talks about the quality of something. Okay, it is when you talk about something being boring or interesting, is also a quality, again an adjective. Then is adept. Adept is again an adjective. It means very skilled or proficient at something. Very skilled or proficient at something. So she is adept at teaching English. Okay, so skilled or proficient at teaching. Okay, revisionism. Okay, whenever we add ISM, the next word, ISM, whenever we add, it is naturally a noun. Okay, it is naturally a noun because it is a name. So revision को revisionism कर दिए, right? So this is definitely a noun. The theory of practice of revising one's, क्या रिवाइज करते हैं इसमें, एटीट्यूड रिवाइज करते हैं टू प्रीवियसली एक्सेप्टेड सिचुएशन और पॉइंट ऑफ व्यू. तो पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो एक्सेप्टेड सिचुएशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको रिवाइज करना, ब्रिंगिंग अ डिफरेंट अप्रोच टू इट और changing the approach or attitude towards it is called revisionism. Very, very important word. I'm bad at making stars. Okay, let's try once again. What the hell is that? Okay, just consider this a star. Okay, okay, status quo. Status quo is a noun and it is a foreign word. Now you will see these foreign words being used many a times, and status quo is a foreign word that is used tremendously in large amount, okay, especially when it comes to editorials. So status quo is also a noun again. इसका मतलब क्या होता है? The existing status. You understand the meaning of this word status? Status का मतलब होता है कि अभी क्या situation है. What is the scenario right now? So in the same way, status quo, it just means what is the existing state of affairs. Okay? अभी कैसा है state of affairs? Especially का मतलब क्या होता है? Particularly regarding social or political issues. तो किस issues के बारे में? Social और political issues के बारे में existing status क्या है? Is called status quo, and that's why it is used so much, right? So the status quo of the COVID vaccines or anything. Okay, so basically status quo is the existing status. I hope this is clear. Moving on to the next. Moving on to the next set of words. Okay. Then you have dysfunctionality. Okay, dysfunctionality. This is the same sort of prefix that is dis as well, but here the spelling changes a little.
functionality. Anything that functions well, that performs well is functional. Anything that is having certain dysfunctionality, that means it is not performing in a proper manner. जैसा उसका performance होना था वैसा performance हो नहीं रहा है, probably because of something lacking or something some malfunction. Okay, so dysfunctionality is also a noun, and this is what it means. Emanates is a verb. Okay, emanate, S is not necessary, the word is emanate. So emanate basically means emerge. Emerge किस चीज से emerge करना, ऊपर आना किसी चीज से, of a feeling, issue or spread out from source. Okay, so is something that emerges, या अगर एक feeling है of a feeling, या कोई सा भी feeling है जो कोई issue पे आ रहा है source के वजह से. So for example, the Russia-Ukraine war has emanated a lot of patriotism among citizens. Okay, so emanated मतलब emerge होके आया है उनमें patriotism after the war, right? So that is the source. Next is construed. Construed का मतलब क्या होता है? It is a verb that means again being used as an action. Okay, is a verb that means it is again being used as an action. Interpret in a particular way. It basically means how are you interpreting it? Okay, are you interpreting it this way, that way? So construed means interpret karna in a certain way. Okay, assertion is the next word, which is a noun. Assertion is very, very important again. Remember, this is very important. Why is it very important? Because you will see assertions being used a lot in critical reasoning and in English language as well. Okay, so assertion क्या होता है? एक assertion होता है confident और forceful statement. ऐसा statement जो confident statement हो और forceful, that has some impact or belief. Okay, is an assertion. Okay, so any assertion made with force या any assertion made with confidence is called, any statement made with force or confidence is called an assertion. Okay, then another important word, this is something that you must have seen and heard in songs as well. We jump in finesse or something. There's a Bruno Mars song which has the word finesse. The song itself is called Finesse. Okay, so finesse is a noun. It means impressive delicacy and skill. So basically something that is very refined, that is very skillful is finesse. Then indecisiveness, I'm sure you all understand. Ness लग जाता है तो वो adjective बन जाता है because it talks about a quality. Okay, so anything that has NESS in the end is an adjective. Okay, so you have lot of adjective suffixes like OUS is also an adjective suffix. And you will see those the words that end like delicious, malicious, all these words end in OUS, that means full of something, which is an adjective suffix. So NESS, OUS, I will give you more probably later. Indecisiveness means something where you are not providing a clear and definite result of something. Okay, so let's say you ask me, ma'am, मुझे क्या पढ़ना चाहिए? For example, let's say you are asking me कि कौन सा newspaper मुझे पढ़ना चाहिए. Sometimes I am telling you the Hindu पढ़ो, sometimes I am telling you the Indian Express पढ़ो. So that is my indecisiveness in the matter. Okay, moving on. Now, there are some idiomatic expressions also that I have taken for your convenience. Understand idiomatic expression or phrasal verbs. Okay, I have taken some phrases as well, which you might not be able to understand other than knowing its meaning. So remember, these are very, very important. Like pit against. Okay, so basically is a phrasal verb.
because it has the verb. Okay, against. Okay, so to cause someone or something to fight or compete against another person or thing. So they have been pitting us against each other when we should be working together. That means वो हमें लड़वा रहे हैं, जबरदस्ती का लड़वा रहे हैं, जहां हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए था वहां वो हमारी लड़ाई करा रहे हैं. So basically pit against is to cause, to fight or compete against someone. Okay, so किसी को उकसा देना लड़ने के लिए या दो लोगों के बीच में लड़ाई लगवाना is pit against. Okay, consolidate is a verb which means consolidated form. You must have heard consolidated form of something. That means make something physically stronger or more solid. Okay, so basically giving it a lot of force. Okay, so consolidate is something that is hard, let's say strong evidence of something. Okay, strong evidence has been consolidated against him. Okay, so consolidate is pile up or make a note of all the things that is making it strong. Okay, so that is consolidate. Woo, stop wooing him, or he wooed her or something like that, is a verb. Okay, seek the favor of, it basically means to woo someone is to seek the favor of someone. Okay, I want to woo an academy to give me more classes, let's say. So that means I'm seeking favor of an academy to give me more classes. Okay, outreach is a noun. Basically outreach is you must have heard of a lot of outreach programs. Okay, so outreach is basically the extended or length of reaching out. Okay, how much has a person reached out, or how much has a voice reached out, or is the outreach of something. Okay, the outreach of love or something like that. Okay, alleged, very very important word for your legal very very important word, alleged. What is the meaning of alleged? Okay, it basically means said without proof. That's it. Okay, so alleging something is saying something without having proof. Okay, or without giving any proof. Okay, so for example, if I blame someone for doing something that I don't have a proof of. Okay, so that is alleging. So I have alleged a certain person, that I have alleged that this person has been stealing from the company or something like that. Okay, so this is said but it is not proven. Okay, to have taken place or have a specified illegal or undesirable quality. Then is tamper. Tamper is a verb which means, very very important word again, tamper, you must have heard it a lot of times, to interfere with something in order to cause damage or make unauthorized alteration. Unauthorized alteration किसी में करने, tamper करना मतलब interfere करना. कैसे interfere करना? Is the interference positive or negative? Negative. Okay, to make something, so to change something illegally. Okay, is tamper. So stop tampering with the device, or he tampered with the device so that he can listen to the conversation or something like that. Okay. Then is resort to. Resort to basically again is a verb. इसके साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं? To यूज करते हैं. So turn to or adopt a course of action, especially an extreme or undesirable one, so as to resolve a difficult situation. तो किसी भी difficult situation को अगर हम resolve करने के लिए, अगर हम किसी भी difficult situation को ले रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत difficult है ये situation and we are not able to change it, but we have to adopt to something, some extreme step, only then it will we will be able to do it. So when you're taking extreme step to solve a matter,
that is resort to. आप मजबूर हो गए, आपके पास और कोई चारा नहीं बचा, तो आपने क्या किया? You resorted to doing this. Okay, so for example, since his father was ill and he had no money, he resorted to stealing. Okay, so resort to means something that has come down to. This is what it has come down to. Okay, then is contend. Contend is again a verb. Assert something as a position in an argument. So contend is just assert something. Assertion हमने देखा था पहले. तो contend is also important. Contend is also, what is that? Is also important. Assert something as a position in an argument. Born out. Okay, born out is a phrasal verb again, and it means it will always be used in the same way. This is the past form of bear. Okay, bear का past form क्या हो गया? Born out. Okay, so bear out and born out. Okay, so confirmed or proven. Okay, so this was born out that he was guilty. Okay, it was born out that he was guilty. That means it was proven or it was confirmed that he was guilty. Okay. Galvanize, again galvanize not in the scientific way. We are talking about the word terminology. यहाँ पर article में use हुआ है as a verb which means shock or excite someone into taking action. Okay, so basically galvanize करने के लिए क्या चाहिए होता? You need the spark. So that's what is the usage. Basically अगर आप किसी को shock कर रहे हैं या excite कर रहे हैं action लेने पे, now is high time, come on. The coaches, what the coaches do to their to the team. So that is galvanizing. Okay, and very important word again, juggernaut. Again, this word has been taken from Hindi or Sanskrit, you can say, and has been inculcated into British English, and it basically means a huge, powerful and overwhelming force. A huge, powerful and an overwhelming force. Okay, that is the meaning. So someone is being called a juggernaut is someone who is being called a huge, powerful and overwhelming force. Someone who is very powerful, overly powerful. Okay, in X-Men also, if you have noticed, there was one villain who was called Juggernaut, and he was huge and he had a lot of power unless you remove his helmet. So that is juggernaut, and that is the last vocabulary word that we are going to see. Now let's move on to the first article. I hope it is clear. Everyone understood all the words that I have discussed? Okay, moving on. So this is the first article that I have taken, which is very important. The article is huge, the editorial is huge, but it is very, very simple. So you will be able to understand it from the very first go. क्या लिखा हुआ है? New Delhi is on a geopolitical high. Which type of high? High as in feeling of elation, feeling of excitement. Geopolitical high पे है New Delhi. That is what the author is going to discuss in this passage. तो main idea क्या हो गया? न्यू दिल्ली कैसे जियोपॉलिटिकल हाई पे है अभी. ओके, व्हाट इज द एडवांटेजेस पोजीशन दैट इट इज इन. दैट्स व्हाट द ऑथर इज गोइंग टू टॉक अबाउट. सो यू हैव द मेन आइडिया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन. इट होस्टेड द G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग March 12th, 2023, the G20 finance minister meeting February 2025. I think this should be again, it should be 2023, but anyway, and the Quad Foreign Minister meeting March 3rd, and National Capital has been teaming with global leaders and thinkers attending the Ministry of External Affairs supported Raisina
dialogue, March 24. So these are all the activities that India has done geopolitically. Okay, the author is mentioning क्या क्या host किया. अभी G20 foreign ministers meeting host किया. उससे पहले G20 finance ministers meeting और उसके बाद quad foreign ministers meeting and national capital. So all these things India has been involved in. Okay, a few weeks ago India also, अब यहाँ पर ऑल्सो का क्या मतलब होता है? एडिशन. ऑर्गेनाइज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जनवरी 12 to 13. तो ये भी और एक चीज एडिशनल. ओके, दैट्स इट. फॉर अ कंट्री दैट हैज फॉर फार टू लॉन्ग inhabited the sidelines of world politics, criticizing and complaining, too powerless to assert itself, this is where the word came from, and often seen as an irritant by great powers for even having an opinion. India's pivotal position at the G20, the Quad, the Shanghai Organization and the Global South today has given it a sudden surge in stature and reputation. So what has happened? There's a sudden surge. Surge का मतलब क्या होता है? Very, very important. There is a sudden spike or rise. ओके तो क्या हुआ है? इसके वजह से इतनी सारी चीजें इसने ऑर्गेनाइज कर दी है जिसके वजह से इंडिया का स्टेचर भी ऊपर हो गया है, इंडिया का रेप्यूटेशन भी बढ़ गया है. पहले तो इनके पास इतना भी पावर नहीं था, या अदर कंट्रीज यूज्ड टू गेट ऑफेंडेड जस्ट व्हेन इंडिया यूज्ड टू इवन हैव एन ओपिनियन. ओके, सो दैट्स हाउ इनसिग्निफिकेंट इंडिया वाज बिफोर एंड नाउ इट इज चेंजिंग. दैट्स व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से. एंड येट इज अ कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड. दैट मीन्स ऐसा नहीं होता, इसके ऑपोजिट कुछ बोलेगा. एंड येट, ऐसा होने के बावजूद, 1 year is too short in geopolitics, and geopolitics is not always a function of happy coincidences. So the author is now saying something to bring down the positive, that okay, we are very happy, we are very joyous about this कि अब उसका stature और reputation बढ़ गया है इंडिया का. लेकिन भी एक साल में जो ये चेंजेस हुए हैं, ये बहुत ही कम पीरियड है टू मेक एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस, और एनी मोमेंटस ओकेजन होने के लिए ये बहुत ही छोटा समय है. ओके, सो पिविटल पावर मूवमेंट के लिए, पिविटल मतलब सिग्निफिकेंट, समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पावर शिफ्ट, अगर पावर मूवमेंट हो रहा है तो इंडिया के हाथ में पावर आने के लिए एक साल का जो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, ये बहुत ही कम पीरियड दिया है. ओके, सो इट्स स्टिल लेस. दैट्स व्हाट द ऑथर इज सेइंग. From the pre-independence days, through the 75 years of its independent existence, Indian leaders from Jawaharlal Nehru to A.B. Vajpayee to Narendra Modi have often spoken of India's role in the world, that its culture, history, demography, and economic strength provide the country with a strong foundation for such a role. So, lot of now the author is explaining this. Okay, why is it such a short period? तो अब author switch कर रहा है topic. Okay, the author has switched the topic. Now the author is going back in time. He's saying, अगर हम देखें इंडिपेंडेंस से 75 ईयर्स से देखें तो जितने भी लीडर्स रहे हैं, अगर आप A.B. वाजपेयी को भी देखोगे, अगर आप नरेंद्र मोदी को देखोगे, ऑल दीज लीडर्स हैव सेड कि इंडिया का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होगा वर्ल्ड में, राइट कि दैट इतना सारा कल्चर, इतना सारा हिस्ट्री है, इसकी वजह से बहुत सिग्निफिकेंट रोल होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में. ओके, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर सच अ रोल. फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री दो, अगेन दो द वर्ड तो, लेकिन मोस्ट पार्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री न्यू दिल्ली was too weak to assert itself or too unimportant, but the solid foundations laid through the decades are starting to make a difference. अब तक देखा गया है, ये तो इन्होंने बोल दिया, ग्रेट लीडर्स ने बोला कि इंडिया विल, बिकॉज इट इज सच अ कॉम्प्लेक्स नेशन, इट विल बिकम ग्रेट. ओके, इट विल हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन जियोपॉलिटिक्स. ओके, बट इफ यू सी, अगर हिस्ट्री देखा जाए तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक कोई ऐसा सॉलिड फाउंडेशन नहीं हुआ है. इन इट्स हिस्ट्री न्यू दिल्ली इज टू वीक टू असर्ट इटसेल्फ, अभी भी बहुत वीक है टू असर्ट इटसेल्फ, ऐसा ऑथर कह रहा है. ओके, नॉट मी, नॉट यू थिंकिंग, नॉट अ फैक्ट, बट द ऑथर इज सेइंग अभी भी वीक है. ओके, और अनइम्पॉर्टेंट है. बट दिस, लेकिन अगेन कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड, सो यू हैव येट, बट, दो, ऑल दीज आर वर्ड्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. The solid foundation
lay through the decades are starting to make a difference. अब ये जो decades मतलब इतने सालों में जितना भी जो ये फाउंडेशन ले डाउन किया गया है बाय ग्रेट लीडर्स, ये सारे अब काम आ रहे हैं, राइट? दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग. Contemporary India's pivotal position in the world politics is through the decades is contemporary India's pivotal position, again it is talking about pivotal position in the world politics, is thanks to a fortunate confluence of deliberate and unforeseen factors which appear to be working in New Delhi's favor. तो अब ये जो नया इंडिया का ये जो significant role है, ये ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे factors हैं जो हम देख नहीं सक रहे हैं, जिसकी वजह से suddenly India has become powerful, right? So हमें पता ही नहीं चल रहा है. The author is saying unforeseen factors, हम देख नहीं पा रहे कौन से factors हैं, लेकिन ये कुछ factors हैं जिसकी वजह से it is rising in power. A far stronger economic and military power quoted by great powers, New Delhi has cleverly used the failure of the post-war world order today to its advantage. तो ये जो cleverly used, again this is an opinion, right? The author's opinion, कि author कह रहे हैं कि इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर का जो बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है, ये क्लेवर इस्तेमाल किया है किसके बाद? पोस्ट वॉर वर्ल्ड के बाद, टुडे टू इट्स एडवांटेज. तो इसने अपने एडवांटेज के लिए कुछ चीज़ें जैसे इकोनॉमिक चीज़ें और मिलिट्री पावर इसने अपने एडवांटेज के लिए बना लिया है. द वरी अबाउट एन अग्रेसिवली राइजिंग चाइना हैज फर्दर प्रॉम्प्टेड ग्लोबल लीडर्स टू लुक फॉर जियोपॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन. और दूसरा रीजन वाई द वर्ल्ड इज टर्निंग टू इंडिया इज द ऑथर इज सेज कि अब जब चाइना इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड एंड इज ट्राइंग टू अग्रेसिवली बिकम द वर्ल्ड लीडर, तो अब एशिया में द वर्ल्ड नीड्स अ न्यू global leader, a new person or new country to take over, to give their power or share, have a cordial relationship in the Indo-Pacific region. Okay, so this is what the author has said till here. Treading the fault lines contemporary. Okay, treading the fault lines again basically means, treading the fault lines का मतलब क्या होता है? That the treading करना is basically walk करना. Okay, nothing, there's no difference between walk in a specific way is tread. Okay, so tread the fault lines. Fault lines is the weak links और जो कमजोरी होती है. तो इसको कैसे चल रहा है contemporary India इस पे? Foreign policy is a textbook example of treading the fault lines of world politics, and as External Affairs Minister S. Jaishankar writes in his book, The India Way. Okay, so we are talking about this book now. कि क्या लिखा हुआ है इसमें? Double inverted commas. Remember, advancing national interests by identifying and exploiting opportunities created by global contradictions. So it is talking about what the book says. Okay, it is quoting the book. To use pedestrian language. Now the author has first used exactly what is given in the book, what is written in the book, and then अगर हम साफ सरल शब्दों में कहें, तो that is what the author means. Okay, साफ सरल शब्दों में कहें तो national interest language, New Delhi has become adept at playing both sides, though not without its cost. Okay, so अब ऑथर क्या बोल रहा है कि न्यू दिल्ली दोनों साइड का गेम खेलने में माहिर हो गया है. बेसिकली इट इज प्लेइंग अ गेम वेयर इट इज प्लीजिंग बोथ साइड्स, बट इट विल कम एट अ कॉस्ट. ओके, नॉट विदाउट इट्स कॉस्ट. ओके, सो बट इंडिया इस गेम में माहिर हो गया है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं. नाउ न्यू दिल्ली इज बीइंग ऑलवेज यूज्ड फॉर इंडिया. सो कैपिटल्स आर यूज्ड, मेटोनमी is a figure of speech जो use होता है. So whenever we are talking about New Delhi, we are talking about the country. Okay. Consider this. India is, now the author is asking you to look and think over this. Okay. India is the chair of both the United States
Vessel G20 and the China centered SCO at the same time. तो यूनाइटेड स्टेट्स के साइड भी है इंडिया और चाइना के साइड का भी समिट्स में का पार्ट है, राइट. इट इज सीकिंग टू बी एट द ग्लोबल हाई टेबल while staking a serious claim to be the leader of the global south. So क्या कर रहा है इंडिया? इट इज सीकिंग टू बी एट द ग्लोबल हाई टेबल. तो अब इसे ग्लोबल हाई टेबल जो है, जो जहां सारे इंपॉर्टेंट नेशंस रहते हैं, वहां पर इसने अपनी जगह बनाने के लिए ऐसा करना शुरू कर दिया है, राइट. ऑन द यूक्रेन वॉर, न्यू दिल्ली हैज नॉट alienated directly or indirectly any of its parties. Now this is an example कि कैसे it is playing both sides. Okay, so यहाँ पर एक example दिया गया है. On the Ukraine war, New Delhi has not alienated directly or indirectly any of the parties involved in the war in a big way, while the looming threat of China has brought it closer to the US and the West than ever before in its history. New Delhi is also this is talking about how it is close to the West as well as China. New Delhi is is also an active member of multilateral forums which has China in it. Okay, so these are examples, you can just skip them. In it, BRICS and SCO. Contemporary India speaks the language of revisionism and status quoism. Okay, quoism is status quo itself, but basically the application of it in the same breath and with ease. So इंडिया ने अपने पहले की गलतियों को देख के सुधार लाई है. इंडिया हैज चेंज इट्स वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, द पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें सुधार लाया बाय और अभी के स्टेटस के हिसाब से नाउ इट हैज स्टार्टेड एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्टेटस नाउ. ओके, what does India want? लेकिन ये सब क्यों कर रहा है इंडिया? What does it want? Okay, the author poses a question and then answers it. New Delhi's objective is not difficult to understand. ये बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ में आएगा आपको कि it has long wanted a seat at the global high table. बहुत पहले से इसे global high table पे बैठना था and that's why it is doing it. But it has realized that it has little chance of getting one currently. लेकिन इंडिया रियलाइज कर रहा है कि अभी मिलना मुश्किल है. ओके, पर्टिकुलरली विद द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आउट ऑफ रीच. तो ये आउट ऑफ रीच हो गया है इंडिया के लिए. इट हैज देयरफॉर, तो कंक्लूजन क्या है, बिन हिंटिंग एट द डिसफंक्शनैलिटी ऑफ द यूएनएससी and the utility of more inclusive and flexible forums such as G20. तो इंडिया क्या कर रहा है, क्योंकि यूएनएससी इंडिया के आउट ऑफ रीच हो गया है, तो उसे कह रहा है कि इट इज़ नॉट इंक्लूसिव एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज इंक्लूडिंग ऑल द नेशंस. एंड G20, बिकॉज इंडिया इज पार्ट ऑफ G20 एंड इट हैज होस्टेड G20 दिस टाइम, सो इट इज सेइंग दैट G20 इज बेटर देन यूएनएससी. ओके, बिकॉज ऑफ इंक्लूसिविटी. Mr. Modi's argument at the G20 foreign ministers meeting that the global governance has failed. Again, this is put in double inverted commas. That means, what does it mean? That this is what he said, right? This is what Mr. Modi said. Is the drive home precisely that point? Okay, so that's exactly what his argument was at the G20 foreign minister meeting. After taking a dig is basically pointing out flaws, intentionally pointing out flaws in someone. Okay, taking a dig at someone is intentionally giving negative comments about someone, okay, or something. At the current global governance structure, Mr. Modi went on to say again, this is what he said: we are meeting at a time of deep global division. We have a responsibility to those not in this room. So, see how cleverly he has acted. He has said that we have a responsibility to those not in this room, underscoring the importance of G20 and India's role in it. So, this is what Mr. Modi said. Okay, again, it is further example of the same point that is given before. Okay, that G20 is better than UNSC. That's what India is trying to show right now. Okay, even though the meeting ended without a joint statement thanks to the Ukraine war,
it was a successful success for at least 2 reasons. Okay, so whenever it says 2 reasons, you will make sure that you look for the 2 reasons. Okay, when it is specified the number, make sure that you look. अब joint statement तो नहीं सारे nation से मिल पाया because of the Ukraine war, लेकिन 2 reasons की वजह से it was a success. What is the one reason? One, it created the environment for the US Secretary of State Antony Blinken and the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov to have a meeting for the first time since the war began a year ago, and 2, when most other forums are unable to bring together the warring parties in one room, the G20 has been able to do so. So, सबसे पहला reason क्या बोल रहा है author? That both US Secretary and Russian Foreign Minister दोनों पहली बार since war एक ही room में पाए गए हैं. And second thing is that it was able to bring both the warring parties together, as in Russia के भी delegates आए थे and Ukraine के भी delegates आए थे इस meet में. So, in New Delhi's pursuit, so that means it is concluding, okay? When it is starting with so, that means it is concluding. So, New Delhi's pursuit of actively seeking a seat at a restructured global high table, the G20, has its utility, as does the global south. Okay, so both of these places, that's why they are useful. G20 is useful and so is global south useful, क्योंकि न्यू दिल्ली actively seek कर रहा है एक नया seat at the table. Okay, New Delhi's heart may or may not be with the global south. इंडिया का हार्ट ग्लोबल साउथ के साथ हो या ना हो, लेकिन it has understood the instrumental utility of the global south argument in its pursuit of power and status. तो पावर और स्टेटस के pursuit में इसको समझ में आ गया है कि ग्लोबल साउथ इंपॉर्टेंट है, चाहे इंडिया पर्सनली लाइक्स ग्लोबल साउथ और नॉट, but it is important. That's what it has understood. If China can use the global south argument for its geopolitical ends, India can definitely do so too. अगर China use कर सकता है to gain political let's say affiliation or political advantage, तो India भी use कर सकता है. क्यों नहीं, India क्यों नहीं use कर सकता है, ऐसा author कह रहे हैं. In its pursuit for a seat at the high table, New Delhi also knows only too well that that falling in line with the US, the West, on the Ukraine war, for instance, reduces India's instrumentally even for them. Some word missing. Okay. So, agar in its pursuit high table, New Delhi also knows, ये भी जानता है, ये जो परसूट कर रहा है कि दोनों साइड से वी विल बी समवेयर इन द मिडल, वी विल बी ऑन दिस साइड एज वेल एज दैट साइड. ओके, सो ये वाले जो परसूट में ये भी जानता है इंडिया कि फॉलोइंग इन लाइन विद, अगर यूएस के साथ इफ इट फॉल्स इन लाइन तो इंडिया का चांसेस इसमें ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है. यूक्रेन वॉर पे अगर कुछ स्टेटमेंट दे देता है तो वेस्ट का, तो इंडिया का चांसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है. फॉल इन लाइन एंड यू विल बी फॉरगॉटन. तो व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से इज दैट इफ यू फॉल इन लाइन, अगर आप सबके साथ सहमति जताते हो, अगर आप मोस्ट पावरफुल ग्रुप के साथ सहमति जता रहे हो और बस आप वही कर रहे हो, तो आप सिग्निफिकेंट नहीं रहोगे. जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप अगेंस्ट कुछ नहीं बोलोगे, तब तक आप दिखोगे ही नहीं. Okay, so that's what the author is trying to say. Appears to be the lesson that it has learnt about real politics over the past several decades. So this is something that it has learnt in the past several decades, according to the author. New Delhi has realized that it is its ability to carefully balance the global fault lines that increases its utility. तो न्यू दिल्ली क्या रियलाइज किया है कि ये बैलेंस करना पड़ेगा, ये फॉल्ट लाइन्स को, वीक पॉइंट्स को, इट विल हैव टू बैलेंस. So those seeking to enlist India's support for bringing more stability and order into the international system might want to consider what New Delhi is really after. What is it really after? Colon basically will give you important
line, okay, something that is important. And what is important over here कि हमें ये कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है. अगर इंडिया को सपोर्ट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट दे आर आफ्टर एंड व्हाट दे आर आफ्टर अ सीट एट द हाई टेबल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. Okay, this is what they are after. This is what the author has been saying from the very beginning. Indeed, New Delhi's revisionist language is rooted in its desire to be a part of a restructure status quo. So, ये जो New Delhi का जो ये revisionist language है, जो अभी ये revise करके और अपना change कर दिया approach, ये किस चीज़ में rooted है? कि अभी जो restructured status है world का, उसमें इसे एक it becomes a part of that, okay? It wants to be a part of that. And the last paragraph, no. The challenges New Delhi's moment in the sun is not without its inherent challenges, okay? अब inherent challenges क्या है? Now the author is going to talk about the challenges इस case में. अगर ये कर रहा है New Delhi, तो इसमें क्या challenges है? For one, the sun will set. ये moment of shine and glory will come to an end. That's what the author is saying. And the moment shall pass. और ये moment निकल जाएगा. Indian chairpersonship of the G20 and the SCO ends this year. तो इसी साल हुआ था. It is going to end this year. So is New Delhi using this crucial year to strengthen strategic partnership, seek geopolitical concessions, and create structure that enhances India's national security. So, is that why India is? That is why India is using this year completely beneficial कि इसी साल हमें ये opportunity मिला है, तो हमें ये सारी चीज़ें, ये सारे changes लाना पड़ेगा कि यहाँ पर partnership strengthen करना पड़ेगा, geopolitical concession करना पड़ेगा, and all these things will have to be done. In geopolitics, national glory is not necessarily an enduring outcome. तो national glory is not necessarily an enduring outcome. ये जो nation का glory होता है, ये बहुत ही वेलकमिंग आउटकम नहीं है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट चैलेंज pertains to optics and framing. अब दूसरा चैलेंज किससे रिलेटेड है? ऑप्टिक्स और फ्रेमिंग से रिलेटेड है. एग्जाम्पल देगा ऑथर. Is New Delhi making friends during this diplomatic high, or is it offending more than befriending? Okay, so very very important question. कि दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जियोपॉलिटिकल हाई पे जो है इंडिया, व्हाट इज इंडिया डूइंग? इज इट मेकिंग मोर फ्रेंड्स और मेकिंग मोर एनिमीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर इंडिया को फेवर चाहिए होगा फ्यूचर में, विच इज रिटन ओवर हियर, सम ऑफ द लैंग्वेजेस दैट emanates from New Delhi in response to Western or the US statement criticism could be construed as needlessly offensive. तो कुछ स्टेटमेंट जो इंडिया ने दिया है ये पूरे इशू पे, तो इन फ्रंट ऑफ यूएस के स्टेटमेंट्स और क्रिटिसिज्म जो की है इंडिया ने, ये आगे जाके ऑफेंसिव बन सकता है. दे कैन टेक इट एज इन एन ऑफेंसिव वे एंड दे कैन स्टॉप having good terms with India, right? While riding high on diplomatic success, being subtle is one's assertions has far more utility, notwithstanding the domestic political uses of harsh foreign policy assertion. So it is very important to be subtle in these things, okay, so that nobody is offended. Indian diplomacy needs to adopt the language of finesse and authority. तो किस टाइप का लैंग्वेज? एक बहुत ही रिफाइंड लैंग्वेज इंडिया को यूज करना पड़ेगा, अथॉरिटी रादर दैन दैट ऑफ अग्रेशन. तो अग्रेशन से आप दिख तो जाओगे, लेकिन आप गलत चीज़ों के लिए भी नोटिस हो जाओगे. सो इंडिया हैज़ टू प्ले इट वेरी वेल. इंडिया हैज़ टू यूज फिनेस टू डू दिस. ओके, दैट्स व्हाट द ऑथर इज सेइंग. दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम. ओके, confident nations need not talk like reactionaries. That's what the author is saying कि अगर confident nation है तो उनको हर चीज़ का reaction देना ज़रूरी नहीं. They don't have to be reactionaries, okay? They don't have to react on every single thing and react aggressively in a certain way, okay? Third, the last thing, balancing opposites
हैज़ इट्स लिमिट, और ऑपोजिट को बैलेंस करने का भी लिमिट होता है. आप एक साइड आप इनके टीम में भी हो, उनके टीम में भी हो, तो ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो सकता है. इफ़ यू play all sides, you might not end up making strong strategic partnership. अगर आप दोनों साइड से खेल रहे हो तो आपकी कभी strong strategic partnership किसी एक टीम के साथ नहीं होगी. That should come to your aid if and when something major goes wrong, such as a failure conflict with China. So let's say India का China के साथ कोई strong conflict हो जाता है, then if India is playing both sides, not many countries will come to its aid. Okay, so it has to for that it has to have strong ties with a certain country and with a certain group of countries, and it will have to choose sides. Let's say if it enters into a conflict with China. While bridging the divide in world politics is a noble task, indecisiveness, ये जो गैप ब्रिज कर रहा है G20 समिट में, जो इंडिया ने गैप ब्रिज किया, it brought countries together. They were in the same platform for the first time after the war and all that. That is a good thing. Kudos to that. That's what the author is saying. लेकिन indecisive रहना might not yield lasting partnership. इसके वजह से lasting partnership हो नहीं पाएगा. Finally, so you understand, यहाँ पर देखो, if you just look at it, it is giving you signals, okay, कि कहाँ पर कौन सा है, ठीक है. So you have finally, then you have third, then you have second, you have first. So you understand कि कैसे passage flow कर रहा है. The author has given the challenges, what are the challenges, and then the author is talking the second. Okay, so these are the ways the author has constructed it in a specific pattern. ठीक है. Finally, there is always a danger of governments using diplomatic highs such as this towards domestic political ends rather than for geopolitical objectives. और बहुत सारे नेता मंत्रियों का क्या होता है अप्रोच कि ये जो geopolitical high है, ये domestic let's say elections में, for example, they are using it for their own benefit कि हमने ये किया था, rather than using it for geopolitical reasons. Okay, international use के बदले national use कर रहे हैं इनका. Okay, that is also a problem. So will New Delhi utilize 2023 to prepare for 2024 or to strengthen the country's place in the Committee of Nations. किस लिए use करेगा ये हमें we are yet to see. Okay, this was the passage. Okay, so the author while अगर हम introduction से देखें, the author is talking about how India is at a geopolitical high. बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है, लेकिन एक साल में कुछ नहीं होने वाला है. इट विल रिक्वायर, देन द ऑथर इज गिविंग कॉशन टू इंडिया कि क्या क्या कॉशनरी टेल है कि अगर आप दोनों साइड से खेल रहे हो, इंडिया ने सीख लिया है दोनों साइड से खेलना, लेकिन अगर आप दोनों साइड से खेल रहे हो तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं. एंड फाइनली द ऑथर कम्स टू द कंक्लूजन कि इनमें क्या क्या प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं, जैसा इंडिया का अप्रोच है अभी टूवर्ड्स जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज, इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, इंडिया फेस कर सकता है इन द फ्यूचर. दैट वाज द होल थिंग. All right. This is the second article that we will just be quickly glancing at, and not much to discuss over here because it is given straightforward and is a very factual passage. पिछला वाला passage जो था completely author का what the author thinks it is talking about that, but this one is going to just talk about hard facts, mostly hard facts. Okay, so the battle of सीमांचल. Okay, सीमांचल में क्या हो रहा है, कौन सा बैटल है सीमांचल का, उसके बारे में हम देखते हैं. द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इज ट्राइंग हार्ड टू मेक इनरोड्स इनटू सीमांचल, करंटली द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ महागठबंधन. सो दिस इज द मेन आइडिया, दिस इंटायर थिंग इज द मेन आइडिया. यही ऑथर बात कर रहा है इस पूरे इसमें. द इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फैक्ट that Union Home Minister
अमित शाह, ये कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे देखा जा सकता है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ओवर हियर कि अमित शाह ने थ्राइस आफ्टर द जनता दल स्नैप्ड टाइज विथ बीजेपी इन अगस्त 2022, तो सीमांचल विजिट किया थ्राइस, दैट शोज, दैट इज एन एग्जाम्पल दैट द ऑथर इज गिविंग कि कैसे भारतीय जनता दल इज ट्राइंग हार्ड. हाउ डज द ऑथर नो दैट इट इज ट्राइंग हार्ड? दिस इज द रीजन व्हाई इट नोज. इन रिस्पॉन्स, अब इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ है, द महागठबंधन विच comprises 7 parties held a rally in Purnia district of Simhanchal on February 25th at the Rangbhoomi Maidan, the same place where Mr. Shah launched his campaign. तो ये जो महागठबंधन है, इन्होंने क्या किया है इसके रिस्पॉन्स में कि इन्होंने वहीं पर अपना क्या लॉन्च किया, एक रैली लॉन्च किया पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर मिस्टर शाह ने लॉन्च किया था अपना कैंपेन. सीमांचल लोकेटेड इन नॉर्थ बिहार कंप्राइजेज ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट्स. कौन कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर कोलन है. सो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एंड अरारिया. ओके, सो दीज आर द 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो इसमें आते हैं. इन द 2019 इलेक्शन द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA won 3 seats and the Congress won 1 in the region. At the time, the JDU was part of the NDA, with the JDU walking out of NDA alliance. The Katihar and Purnia parliamentary seats are now with the JDU. Okay, so the author is talking about कैसे power shift हुआ है and कैसे BJP is trying to get into this power shift. Okay, तो basically यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 2019 इलेक्शन अगर देखा जाए तो एनडीए जो था उसने 3 सीट जीती थी एंड कांग्रेस को 1 सीट मिली थी. एंड उस टाइम जेडीयू जो था वो उसका पार्ट था और जेडीयू ने अलायंस तोड़ा था, मूव ऑन किया था. तो उसके बाद कटिहार और पूर्णिया पार्लियामेंट्री सीट्स जेडीयू के पास आ गई थी. अब अरारिया बिलोंग्स टू बीजेपी. अब किसको, अरारिया किसको आ गया, बीजेपी. एंड किशनगंज बिलोंग्स टू कांग्रेस. ये हो गया. द 4 डिस्ट्रिक्ट represents 24 assembly constituencies. सीमांचल इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट. तो सीमांचल इसीलिए इंपॉर्टेंट है फॉर 2025 असेंबली पोल्स. तो इसी के लिए सीमांचल बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है. शिफ्ट ऑफ पावर दी ऑथर हैज स्पोकन अबाउट कि 2022 में क्या हुआ था और कैसे कैसे. तो इसीलिए सीमांचल क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है. फॉर द जेडीयूज एंड द Rashtriya Janata Dal RJD pitted against the BJP, the high share of Muslims, 47% could be politically beneficial. तो अगर ऐसा कर दिया जाए कि द जेडीयू और आरजेडी को एक दूसरे, इन दोनों को बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाए, द हाई शेयर ऑफ मुस्लिम जो 47% है उनको पॉलिटिकली बेनिफिट कर सकता है ये. ओके, सो बट नाउ द बीजेपी इज फोकस्ड on not only consolidating Hindu votes but also wooing the Pasmanda Muslims who constitute over 80% of the Muslim population in Bihar. तो अब BJP क्या कर रहा है? It is not just focusing on Hindu votes, it is now focusing on the 80% population, that is Muslim votes as well. It is concentrating on that. So Pasmanda Muslims जो 80% of Muslims हैं यहाँ पर, उन पे भी फोकस कर रहा है. दिस इज अ कॉज ऑफ वरी फॉर महागठबंधन. अब ये चीज महागठबंधन के लिए बहुत वरी वाली बात हो गई है, बहुत परेशानी वाली बात हो गई है. क्यों? क्योंकि द पसमंदा मुस्लिम्स आर द वीकर सेक्शंस ऑफ मुस्लिम्स हु कन्वर्टेड टू इस्लाम फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस एंड दलित ग्रुप्स लॉन्ग अगो. तो ये कौन से मुस्लिम्स हैं जो कन्वर्टेड हैं इस्लाम में, बैकवर्ड क्लासेस से कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम में और दलित ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं. द कम्युनिटी विद पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड नो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हैज बीन डिमांडिंग SC स्टेटस फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ये बहुत टाइम से SC स्टेटस मांग रहे हैं, बहुत टाइम से कि हमें शेड्यूल कास्ट में डाल दिया जाए, हमारा स्टेटस बना दिया जाए. द साचार कमिटी रिपोर्ट noted that the condition of Dalit Muslims and Dalit Christians has not improved. अभी तक कोई improvement नहीं आया उनका. And the Ranganath Mishra Commission recommended delinking SC status from the region.
तो उनका एक तो कंडीशन इंप्रूव नहीं हुआ है और उनको एससी स्टेटस से डीलिंक करने की भी बात चल रही है। तो इसीलिए ये महागठबंधन के लिए एक प्रॉब्लमैटिक चीज है, क्योंकि अब बीजेपी फोकस करेंगे इन पे तो इनका वोट्स तो ऑब्वियसली बीजेपी को जाएगा, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी विद द रूलिंग पार्टी राइट नाउ। Apart from its outreach to the Pasmanda Muslims, the BJP also alleged that there are serious issues with the caste census launched by the JDU's chief Nitish Kumar. So, ये वाला इशू के अलावा भी बीजेपी ने क्या आरोप लगाए हैं कि बहुत सीरियस कास्ट सेंसस इश्यूज हैं नीतीश कुमार ने जो किए हैं, तो ये भी अलेज कर रही है बीजेपी। The party says the format in which the exercise is being carried out looks flawed. तो उसमें गलती है, जिस तरीके से फॉर्मेट ऑफ एक्सरसाइज जो अभी फॉर्मेट यूज किया जा रहा है उसमें एक फ्लॉ है, उसमें गड़बड़ है, उसमें गलती है, एंड कुड पोटेंशियली टैम्पर विद द सिटीजनशिप रजिस्टर। तो इसके वजह से सिटीजनशिप रजिस्टर में भी टैम्परिंग हो सकती है। It alleges that the process ignores the threat. क्या इग्नोर करता है ये प्रोसेस? What is the allegation that it is putting? Ignores the threat of counting illegal Bangladeshi migrants and Rohingya as Indian citizens. तो ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स और रोहिंग्यास को इंडियंस नहीं मान रहे हैं। That is a problematic thing. सीमांचल is a border region. अब ये एक border region है with नेपाल। अब ये फैक्ट है यहाँ पर the author has given fact. Border region है with Nepal next door and Bangladesh not far away. While the अब देखो इसके अब fact से related क्या बोल रहा है the author? While the Mahagठबंधन has been saying that the BJP is resorting to a divide and rule policy, महागठबंधन क्या बोल रहा है इसके बारे में कि बीजेपी divide and rule करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन Mr. Shah has warned the people in Valmiki Nagar of West Champaran district and Patna that a victory of the Grand Alliance would ensure the return of a jungle raj. तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर इन्होंने वार्न किया है इन कहाँ के लोगों को, वाल्मीकि नगर ऑफ द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट एंड पटना, कि अगर दैट अ विक्ट्री ऑफ द ग्रैंड अलायंस, ये जो अलायंस है, ये जो गठबंधन है, इनकी अगर जीत हो जाती है तो जंगल राज फिर से शुरू हो जाएगा। The BJP has planned many rallies in the days to come in the Simhanchal region. The Mahagठबंधन has to deal with not only the BJP challenge but also contend with the OAC factor. तो बस अब महागठबंधन के लिए बस बीजेपी एक प्रॉब्लम नहीं है, OAC factor भी author is saying the presence of all India Majlis Ittihadul Muslimin leader Asladuddin Owaisi could benefit the BJP as the AIM is expected to dent the vote bank of the Mahagठबंधन as it has done in previous elections and regions. तो ये असादुद्दीन ओवैसी जो हैं इनको बेनिफिट हो जाएगा, AIAM को बेनिफिट हो जाएगा वोट बैंक्स में, जिसकी वजह से अगेन महागठबंधन को प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रीवियस इलेक्शन में कर चुके हैं ये। द पीपल ऑफ सीमांचल बिलीव दैट मिस्टर ओवैसी स्टैंड्स फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। सीमांचल के लोग ये मानते हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खड़े रहते हैं, हमारे साइड हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हैं। दिस वॉज बोर्न आउट, और ये by 2020 assembly polls when the AIM won 5 seats in Simhanchal, और ये इसका प्रूफ है कि जब 2020 असेंबली इलेक्शन हुआ था तो AIM won 5 seats in Simhanchal, 5 सीटें मिली थी उन्हें। Simhanchal is considered the stronghold of महागठबंधन, whereas for BJP it is a political weaker area. महागठबंधन के लिए एक strong area है, लेकिन BJP के लिए एक weaker area है, said संजय कुमार। ऐसा कौन बोल रहा है? Again, double inverted comma. Political analyst based in Bihar. The BJP is trying hard to galvanize support, और BJP अब क्या कर रहा है? Galvanize करने की कोशिश कर रहा है support for the party and polarize the region. तो इनका कहना है कि BJP क्या करने की कोशिश कर रहा है? एक तो galvanize करने की कोशिश कर रहा है support
स्पार्क करने की कोशिश कर रहा है सपोर्ट, और कैसे कर रहा है, पोलराइज कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहा है. पोलराइज इज बेसिकली व्हेन यू हैव व्हेन टू थिंग्स आर इन कंप्लीट ऑपोजिट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ समथिंग. ओके, तो एक्सट्रीम causing something to be in extreme. Okay, so polarize करने की कोशिश कर रहा है, which has poor people in large numbers. तो इसमें कहाँ क्या है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं in large number. It wants to make inroad, तो यही कह रहे हैं संजय कुमार की, एक तो चूंकि ये गरीब लाचार लोग हैं, इनको पोलराइज, इनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है बीजेपी बाय डिवाइडिंग एंड रूलिंग एंड गैल्वनाइज करने की कोशिश कर रहा है सपोर्ट. ओके, so moreover it will try to set the agenda before the Lok Sabha polls that it is the party which can save the country and Hindutva. तो बहुत जल्द ऐसा करने की कोशिश करेगा बीजेपी की अपने आप को लोकसभा पोल्स में दिखाने की कोशिश करेगा कि यही कंट्री को सेव कर सकता है और यही इंडिया को सेव कर सकता है. दैट्स व्हाट द ऑथर इज सेइंग, नॉट द ऑथर, संजय कुमार इज सेइंग. ओके, वेदर द बीजेपी स्ट्रैटेजी ऑफ कंसोलिडेटिंग हिंदू वोट्स while also appealing to the Pasmanda Muslim for their vote succeeds remains to be seen. अब ये सक्सीड करता है, ये जो अटेम्प्ट है बीजेपी का, ये नहीं करता है, ये अभी हमें देखना बाकी है. बट लेकिन द महागठबंधन हैज टू कंटेंड with both external and internal challenges. दोनों बाहर के challenges, that is BJP, and internal challenges like AIM, is something that Mahagठबंधन has to fight with both the external as well as internal challenges. Against the backdrop of rumors about a growing rift between the JD and the RJD, Mr. Kumar and Tejasvi Yadav emphasized that the Grand Alliance is intact in Bihar and is ready to stop the juggernaut of Prime Minister Narendra Modi. So the author is basically not the author, Mr. Kumar. Again, this is the author is ended with a conclusion or an opinion of Mr. Kumar that ki महागठबंधन के बारे में उन्होंने कहा कि अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो ग्रैंड अलायंस है ये कंप्लीटली इंटैक्ट है और ये रेडी है टू फाइट दिस पावरफुल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ओके, दिस वाज द पैसेज एंड these were the two editorials that we had to discuss. I hope everyone got it. I hope that you understood what I was talking about in the session, and I hope that this way of dealing with the editorial is something that you liked. If anything else that you want me to include in the class or session, please do let me know. I will see you again next Thursday at 12 p.m. for the same session. Till then, keep reading the newspaper on your own and try this till then and see if it works. If this is the system of reading is working for you, very well, good for you. If it is not, please do let me know what else can I help you with. Thank you everyone. Have a fine day.